Hi guys, welcome back to my channel Your Lit Guru. I am Rishali and I will be teaching you English literature. So finally, in today's video, we are going to begin with our discussion of the Old English literature or Anglo-Saxon literature. If you go to my channel and take a good look at it, you will find a playlist titled The Anglo-Saxon Period, which basically covers the entire history of Anglo-Saxon age as well as the Old English literature. Okay, as I had already explained in the previous videos, Anglo-Saxons came from very powerful Germanic nations to Britannia, and they lived there from 450 AD to 1066 AD. They were the ones who contributed majorly to the establishment of English culture, right? The most important contribution made by the Anglo-Saxons to this culture from the perspective of an English literature student would be English literature itself, right? Before we begin with the literature, I would like to introduce you to a term called the Dark Ages. Anglo-Saxon age is also known as the Dark Ages because इस time पे बहुत ज़्यादा wars थे. I had already told you कि कितने सारे invasions हो रहे थे different Germanic tribes के बीच, right? Secondly, literature इतनी produce नहीं हुई. There are only a handful of important documents, a handful of important manuscripts, which we would have to do in detail, a handful of writers, right? Not much was created during the age. एक और reason literature कम क्यों है वो ये है कि majorly literature oral literature थी, ठीक है? So it was orally transmitted. A lot of literature was not written down by the scribes. And इसका रीजन ये है सारी लिटरेचर को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, ठीक है? एंड व्हेन वी विल बिगिन विद द एंग्लो-सैक्सन पोएट्री, you will find that religious literature is better preserved in comparison to the secular literature. So इसका रीजन ये है that church had the monopoly over writing, and उनके जो scribes थे वो सिर्फ religious literature को जो orally produce होती होगी, they used to engrave it in manuscript. ऐसा नहीं है, बहुत कम literature थी, होती होगी, like बहुत होती होगी, but वो preserve ही नहीं हुई. But still, luckily, we do have a lot of secular poetry and prose works. And one of the other reasons why this age is called as Dark Ages is because it witnessed a fusion of different ways of life. So far we know that the Anglo-Saxon society is a primitive society. Okay, वो अभी establish हो ही रही थी, right? Religion अभी establish हो रहा था, right? We have Christianity being introduced. Then we have heathenism as well. We have three major languages: Latin, which was used for ecclesiastical or religious official purposes. Then we had the Germanic language, which was brought by the Germanic tribes. And we have Old English language as well. Now, I will begin with the features of Anglo-Saxon poetry or Old English poetry. Okay, wait. Firstly, let me introduce you to the three important forms of English literature that are poetry, prose, and drama. What is drama? It is the form of composition designed for performance in theatre. But right now, Anglo-Saxons did not have theatres. I'm not very sure if they had theatres or not, but what I have read so far in the books, they did not have theatres. But obviously, research can happen because there was drama in Greek times and Roman times, and we have to cover those dramatic works as well. English culture has borrowed a lot. English literature culture both has borrowed a lot from Greek civilization and Roman civilizations. We would have to cover their literature as well, and I will make a separate video on that topic later on. But as far as Anglo-Saxon age is concerned, we don't have to study any dramatists or history of drama. It will begin with the miracle and mystery plays later on when we will reach the medieval age. So poetry and prose are the most important forms of literature जो हम अभी cover करेंगे, ठीक है? So हम poetry से start कर रहे हैं. Poetry basically it is divided in three subject matters, which is religious. Okay, then we have heroic poetry, and then we have poetry that basically describes the trials of daily life के hassles, trials, या फिर रोजमर्रा के problems and challenges, mental or physical,
जो डिस्क्राइब करती है। नाउ पहले ना एक बार पोइट्री एंड प्रोज का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। पोइट्री भी सेंटेंसेस एंड वर्ड्स से ही डील करती है, प्रोज भी सेंटेंसेस एंड वर्ड्स से ही डील करता है। बट डिफरेंस क्या है ना, जो पोइट्री है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट हैज एन एस्थेटिक क्वालिटी, इट इज इनडायरेक्ट, ओके, मीटर, कैडेंस, राइम, ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन पोइट्री, ठीक है। इट इज वेरी वेरी आर्टिस्टिक इन अ वे। प्रोज इज ऑल्सो आर्टिस्टिक, बट प्रोज काफी डायरेक्ट वे में लिखा जाता है एंड वो पैराग्राफ्स में होता है, राइट, एंड पोइट्री स्टैंजाज में होती है। बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट नहीं है इनका डिफरेंस, बिकॉज आप जैसे जैसे इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड्स को स्टडी करोगे ना, तो प्रोज एंड पोइट्री हर पीरियड में इवॉल्व होंगे, ठीक है। किसी पीरियड में प्रोज इंपॉर्टेंट होगा तो पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, किसी पीरियड में पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो प्रोज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नाउ पोइट्री के भी बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे एंड प्रोज के भी बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। नाउ लिसन, तुम्हें सिर्फ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस नहीं देखने हैं, तुम्हें सिर्फ लिटरेचर की हिस्ट्री नहीं देखनी है, तुम्हें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल स्टडी नहीं करनी है ऑथर्स एंड उनके वर्क्स की, बट ये जो लिटरेरी फॉर्म्स है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनकी भी सब ब्रांचेस है, ठीक है। इनके अंडर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप की पोइट्री आती जाएगी। स्लैम हो गया, एपिक हो गई, लाइक एलिजीज हो गई एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी पोइट्रीज है, ठीक है, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी। सिमिलरली प्रोज में यू विल हैव नॉवेल्स, यू विल हैव लेटर्स, राइट, यू विल हैव एसेज, सो मेनी थिंग्स। सो 20th सेंचुरी तक आते आते यू विल फाइंड कि पोइट्री भी फ्री वर्ड्स में लिखी जाएगी, जो थोड़ा प्रोज वाली क्वालिटी, राइट, एंड सिमिलरली यू विल फाइंड सर्टेन पीसेस ऑफ प्रोज जिसमें रिदम होगी या कैडेंस होगा, ठीक है। प्रोज एंड पोइट्री है तो नेचर में डिफरेंट ही, बट उनके जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं दे कैन ओवरलैप डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिटरेचर के रूल्स एंड क्रिटिसिज्म के हिसाब से, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, आई एम सॉरी मैं डाइग्रेस करी बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट यू। सो क्रिटिसिज्म क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिटरेचर, ओके, द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। तो हर पीरियड में डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट किया गया था लिटरेचर को। इसका मतलब ये है कि जो जॉनर्स जो थे, लिटरेरी फॉर्म्स जो है, those also changed with time. Now हमारी जितनी भी एंग्लो सैक्सन पोइट्री है, ठीक है, it is preserved in 4 manuscripts, okay. The first one is M.S. Cotton Vitellius A15, also known as the Novel Codex or the Beowulf manuscript. And why is it known as the Beowulf manuscript? Because इसमें जो first English epic poem है, which is Beowulf, वो preserved है, right? And Beowulf के बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी बताऊंगी, because it is very important since it is the first English epic poem. It has a secular theme which is heroism, and मैं भी बाद में डिटेल में कराऊंगी. Then the second one is the Junius manuscript. Then we have the Vercelli book and the Exeter book. Now Exeter book is also very important. उसके बारे में भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी. कुछ factual questions भी हैं जो इस स्पेसिफिक मैन्यूस्क्रिप्ट से पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज मेक नोट्स. जो पोएट्री होती थी उस टाइम पे वो एलिटरेटिव मीटर में लिखी जाती थी, ठीक है. सो एलिटरेटिव मीटर क्या होता था, बेसिकली मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ पोएम का, एक स्टांजा का ओल्ड इंग्लिश पोएम में से जो एलिटरेटिव मीटर यूज करिए. एलिटरेशन क्या होता है, beginning of 2 or more words in the same line with the same sound or letter, ठीक है. जैसे S आएगा 2-3 बार S आ गया या L आ गया, like that. तो alliteration होता है repetition of letter sounds basically. So in alliterative meter there is a definite pause between the 2 lines which is known as caesura, okay, and the 2 halves of the lines contain alliteration and stresses. So meter क्या होता है, meter is basically a recurrence of a prominent feature in a series of speech sounds. Now हमारे जो words हैं, okay, they are made up of phonemes, okay, they are made up of sounds. जैसे रूशाली है तो वो रूशाली, so you can hear consonants and vowel sounds in it, ठीक है. So मैं अभी language के characteristics नहीं करा रही हूँ, तो I am not delving into the topic
right now, वो मैं बाद में कराऊँ. So let's do the alliterative meter properly. Okay, so कोई भी words जो alliterative meter use करता है, it has alliteration. Alliteration मैंने समझा दिया. It is stressed. Stressed क्या होता है? जो series of speech sounds होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो कुछ words पे मैं कुछ speech sounds में मैं ज़्यादा stress डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं. For example, apple. Apple. तो apple में ए पे ज़्यादा stress डल रहा है in comparison to जो पल है, राइट. ये भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में करने होते हैं. वो टॉपिक में अभी नहीं करा रही, तो मैं उसमें नहीं जा रही. बट alliterative meter का ये फीचर है दैट इट कंटेन्स स्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड 3 और 4 स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, 2 in each part. क्योंकि मैंने बताया कि सेजुरा होता है एक लाइन में, देयर इज अ पॉज विच इज अ सेजुरा, ठीक है, उसके आगे की लाइन एंड पीछे की लाइन. तो दोनों लाइन्स में alliteration हो रही है एज वेल एज स्ट्रेस सिलेबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज योर alliterative meter पर्टिकुलरली एंड उसकी क्वालिटीज. तो मैं पता होना चाहिए कि alliterative meter कौन से पीरियड में यूज होता था. तो वो एंग्लो-सैक्सन एज में यूज होता था एंड इसका रिवाइवल होगा आगे जाके सेकेंड सबसेक्शन में मिडिवल एज के एज वेल, इसलिए alliterative meter इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ इफ यू ओपन योर glossary of literary terms by M.H. Abraham, तो तुम्हें मीटर एंड प्रोसिटी 2 टॉपिक्स मिलेंगे. इन दोनों को जाके पढ़ो अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सी एज में कैसे टाइप के मीटर आए, कौन से इंपॉर्टेंट थे, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड जैसे जैसे तुम लिटरेचर कर रहे हो वैसे वैसे अपने लिटरेरी डिवाइसेस भी अगर अच्छे से समझते जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. alliterative meter की एक और क्वालिटी है कि उसमें राइम नहीं होता. इट डजंट राइम. ओके. Another feature of Anglo-Saxon poetry is that there is a lack of the record of authorship. यानी कि we don't know कि authors कौन थे, but ऐसा नहीं है, there is an exception. Researchers and historians have done a good job. A lot of poetry didn't have a sign of the author, ठीक है. तो साइन नहीं था तो ऑथरशिप नहीं आइडेंटिफाई हो पाई. बट देन सिमिलर, क्योंकि फीचर्स सिमिलर है कुछ पोइट्रीज के, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अंडर कैटेगराइज कर देते हैं. देन देयर आर अदर फीचर्स दैट यू विल फाइंड इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. फॉर इंस्टेंस डाइग्रेशंस, which is a departure from the main subject, which I do a lot. Secondly, we have allusions, which is a passing reference to certain historical events or places or people in general. We have analogies, which is basically comparison between one thing and other. We have elegies and we have lyrical poetry.